Good morning, everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Shivrat Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about the Gram Panchayat. So today we will read about the Panchayat Samiti. It is the middle level of the three-tier system of the Panchayati Raj, and it is known as the different name in different state like Kshetra Samiti, Block Samiti, Panchayat Samiti, etc. And it is work as the intermediary between the Jila Parishad and Gram Panchayat. So, as we see here, local level government, local self government is divided into three parts. जिला परिषद, पंचायत समिति, देन पंचायत समिति, देन ग्राम पंचायत. So in Panchayat Samiti, many Gram Panchayats are included in a Panchayat Samiti. Many villages are included in the Panchayat Samiti. Then Panchayat Samiti, composition of Panchayat Samiti. Composition of Panchayat Samiti. Panchayat Samiti constituents the following. First, it means Panchayat Samiti constituted the following members. Means Sarpanch and chairperson of villages in the related blocks. Means the Sarpanch and chairperson of the Gram Panchayat, it means Pradhan, they all are included in the composition of Panchayat Samiti. Then second, MLAs, MPs and MLCs of that block, it means MLA, MP and MLCs of that block are included in the composition of Panchayat Samiti. Then elected member of
means the person who is elected from that block, they are the member of Panchayat Samiti. Then some other officers like block development officer are also included and related to the composition of Panchayat Samiti. Then term. The term of Panchayat Samiti is 5 years. 5 years in all states. In all states, it means the term of Panchayat Samiti is 5 years in all states which have block. Then meeting. The Panchayat Samiti meet once in a month, and then in very first meeting of the Panchayat Samiti, the chairperson and vice chairperson elected by the member of Panchayat Samiti. In first meeting, the chairperson and vice chairperson of the Panchayat Samiti are elected by the member of Panchayat Samiti. Then Panchayat Samiti perform a number of works. So look here about the function of Panchayat Samiti. Function of Panchayat Samiti. The various functions performed by the Panchayat Samiti, like improvement in agriculture, like improvement in agriculture, and land. Improvement in agriculture and land related to the all villages are the function of the Panchayat Samiti. Then different programs and schemes related villages run by Panchayat Samiti. Then third, watershed development program.
वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम runs by पंचायत समिति द पंचायत समिति गिवन द सपोर्ट टू द वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। जो पंचायत समिति होती है इसके साथ साथ वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन पर भी अब सम अनदर वर्क ऑफ पंचायत समिति आर प्रोवाइड वाटर सप्लाई in villages, second, construct and repairs road of villages, then generate self employment in the villages, next welfare of SCs, SC, ST and OBCs. Then the Panchayat Samitis work on the welfare of the scheduled caste, scheduled tribe and OBC. इसका मतलब पंचायत समिति जो है अब अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी मतलब अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो भी उनकी हितों में जो भी मतलब उनकी मदद हो सकती है और उनको संरक्षण ब्लॉक के अंतर्गत देती है। देन मेक रूल एंड रेगुलेशन फॉर market and villages, market of villages, मीन्स जो गांव के अंतर्गत जो भी जो है बाजारें आती हैं बेटा उनके लिए नियम और प्रावधान को बनाने का भी जो है कार्य पंचायत समिति करती है। पंचायत समिति जैसे मार्केट में कौन सी दुकान कहाँ पर होगी, किस जगह पे लोग बैठेंगे, मतलब
किस जगह पे लोग सब्जी मतलब किस चीज़ की दुकान करेंगे, इसका निर्धारण और साथ साथ नियमों को बनाना, ये सारे कार्य जो है करती है पंचायत समिति। इसके अलावा इसके बाद जो सुधारात्मक कदम होते हैं, इम्प्रूवमेंट, जैसे जो एग्रीकल्चर में जो सुधारात्मक कदम होते हैं उसको भी पंचायत समिति उठाती, जैसे कि बीज, उर्वरक और कीटनाशक, जो भी इनमें इम्प्रूवमेंट करनी होती है वो उसको भी जो है मतलब वो पंचायत समिति करने की कोशिश करती है, साथ साथ इसको लागू भी करती है, जिससे कि अच्छी तरह से खेती और चीज़ें या कृषि के उत्पादनों में वृद्धि हो सके। ठीक है, देन सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स of income. It means there are various sources of income for Panchayat Samiti. The first is grant given by state government, state and central government. मतलब सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न तरह के जो भी ग्रांट्स या विभिन्न तरह की जो आय जो है पंचायत समिति को प्राप्त होती है, ये उसकी आय का सबसे प्रमुख साधन है। देन विभिन्न तरह के जो टैक्स लगाए जाते हैं, मतलब विभिन्न तरह के जो टैक्स लगाए जाते हैं गांव में, वो भी इसकी आय के एक प्रमुख साधन है। सो दिस इज ऑल अबाउट पंचायत समिति। पंचायत समिति। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि पंचायत समिति में सबसे पहले पंचायत समिति एक मध्य मतलब मिडिल लेवल है, मतलब ये वर्क करता है इंटरमीडिएटरी लेवल का, किसके किसके बीच, मतलब जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच। देन इन कंपोजिशन ऑफ पंचायत समिति देयर आर मेंबर ऑफ सरपंच एंड चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत आर इंक्लूडेड हियर। देन MLC, MLAs and MPs are included here. Then the elected member of the block is also included in composition of Panchayat Samiti. Some another government officer are included here, and the term of Panchayat Samiti is 5 years. There are many functions performed by the Panchayat Samiti, which I have already told you here. So this is all about the Panchayat Samiti. So then we will meet in next lecture. Thank you. Have a nice day.